So, hello everyone, audio video clear? Hello everyone, I'm Sudipta Simran Ponda welcoming you all to Vedang Teachings powered by Vedang Institute of Technology. So, tell me how are you everyone? Everything sabu acha? ता पूर्वर मत बस कहि दियो कि मैम ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर सो दैट हमें स्टार्ट करि परिबा क्लास. All clear? केमिति सब अच्छा तो मानकर प्रिपरेशन केमिति गला लास्ट संडे हाउ वाज योर वीकेंड ता पूर्वर टिके देखि दियो जदि आपण माने वन डे एग्जामिनेशंस नेबा पई चाहूचंती तार प्रिपरेशन करूचंती ताहाले आपण माने हमरा महापैक को जॉइन करि परिबे. द प्राइस इज 3999 ओनली एंड इथि वैलिडिटी रहउची 2 इयर्स एंड जदि ए पैक आपण माने नउचंती सब वन डे एग्जामिनेशन ता भीतर कवर अप हेजिवो एल्स आपण मानेकर स्पेसिफिक आपण माने जदि नेबा को चाहूचंती नै परिबे बट स्पेसिफिक जदि नउचंती तार वैलिडिटी जस्ट 1 ईयर रहिबो. आफ्टर दैट सी जदि आपण माने टीचिंग पई प्रिपरेशन करूचंती टीचिंग एग्जामिनेशन पई ताहाले आपण मानकर डिफरेंट बैचेस अछि जेमिति कि एसएसबी टीजीटी पई जदि आपण माने प्रिपरेशन करूचंती 1 ईयर इज वैलिडिटी. जदि जेटी एंड एटी पई प्रिपरेशन करूचंती 1 ईयर वैलिडिटी. एसएसबी टीजीटी पई 1 ईयर वैलिडिटी विथ डिफरेंट नेम जेमिति कि हमर एसएसबी टीजीटी पई द्रोण अछि, जेटी एटी पई प्रारंभ अछि एंड संस्कृत अभी पेड बैच हमर प्रोवाइड करा जाउछि जो थरे की वैलिडिटी 1 ईयर सहित एसएसबी टीजीटी आपण माने 1499 ने पाई परिबे. जेटीएटी 1 ईयर वैलिडिटी सहित 1199 ने पाई परिबे. एसएसबी टीजीटी वैलिडिटी सहित 1 ईयर 1499 रे आपण माने अवेल करि परिबे. आउट ऑफ दैट जदि आपण माने सिविल सर्विस में प्रिपरेशन करूछंती अधिकारी बैच हमें लॉन्च करिछु जोटा कि ओसीएस प्री पई जदि आपण माने 2025-26 पई नेबा को चाहूचंती 1 ईयर वैलिडिटी सहित 6999 परचेज करि परिबे. अधिकारी प्री प्लस मेंस बैच पई नेबा को चाहूचंती 1.5 ईयर वैलिडिटी सहित 11999 जदि कोनोसी मेंस बैच खाली नेबा को चाहूचंती या फिर ऑप्शनल मेंस रो डिफरेंट जीएस पेपर चारटा अछि जदि आपण ताकू नेबा को चाहूचंती आपण मेंस बैच नै परिबे बट सेतिरा आपणकर आउट ऑफ रहिबो ऑप्शनल पेपर. तो ऑप्शनल पेपर जोटा आपण माने प्रिपरेशन करछंती ता पई ओनली ऑप्शनल पेज नेबा को पड़िबो 4999 रे. एठी होची हेल्पलाइन नंबर किछि प्रॉब्लम अछि तो कांटेक्ट टू दैट. ओके आसो डायरेक्ट करिबा क्वेश्चन आंसर. तो आज जियोग्राफी रो किछि मैप रिगार्डिंग क्वेश्चंस त माने पई नै कि आसीछि जोटा कि इजीली तमे माने डिटेक्ट करि परिबो इन क्लासेस और जते बेले एग्जामिनेशन आसीबो क्वेश्चन आसीबो त आपण माने आराम से हैंडल करि परिबे. फर्स्ट क्वेश्चन कोन देछि ना a true model of the earth is called a true model of the earth is called a what? जते बेले हमें अर्थ को कंसीडर करूचे तार गोटे ट्रू मॉडल कहले कोन बुझे मैप को बुझुचे ग्लोब को बुझुचे स्केच को बुझुचे या फिर तार प्लान को बुझुचे कहा को हमें कहि परिबा ना दिस इज जस्ट लाइक अ अर्थ रो गोटे कॉपी पेस्ट बोले हमें को कहि परिबा. देखो जते बेले मैप कथा कहूची कीप इट इन माइंड. ओके जते बेले आपण मान को मैप कथा कहूची दैट मींस कोन ना आपण गोटे पेपर देखुचंती पेज देखुचंती सेथिरे गोटे फ्लैटनिंग कंडीशंस देखुचंती गोटे फ्लैट शीट हमें कहि परिबा द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन ए फ्लैट शीट दैट इज द मैप. हां नहीं मते को that is what now that is map. जते बेले तुम क्वेश्चन पचारुची कि व्हाट इज ग्लोब ता माने कोन बुझुचो ग्लोब माने कोन कहूचे हमें ना जते बेले गोल हे कि आपन को देखा जाउची ग्लोब गोटे मिनिएचर ऑफ द अर्थ हमें कहूचे 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ हमें कहि पाछु. तो 3D मॉडल ऑफ अर्थ जते बेले कहिबा द 3D मॉडल ऑफ अर्थ ताको हमें कोन कहि परिबा ना दैट इज द ग्लोब एंड दैट इज द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ इज द ग्लोब. बुझी पारला जो थरे हमें देखि पारुचे लाइक आपनकर गोटे ग्लोब जति आपन माने
गोटे गोल करके धरुचंती सेतिर आपण माने कोन देखुचंती कि डिफरेंट लाइक इट शोज द करेक्ट शेप इट आल्सो शोज द करेक्ट साइज इट आल्सो शोज द लोकेशन ऑफ द कोन डिफरेंट कंटिनेंट्स एंड द ओशंस माने डिफरेंट रिप्रेजेंट करूची अर्थ रो टिल्ट केमती हेची केते डिग्री ईस्ट अछि केते डिग्री वेस्ट केते डिग्री नॉर्थ केते डिग्री साउथ ए सब जिंस आपण माने कोन ग्लोब रे परफेक्टली देखि पारुचंदी तार टिल्टिंग कंडीशन भी देखि पारुचंदी इवन तार ऑर्बिटल प्लेन को भी कंसीडर करि पारुचंदी त हमें ताको कोन कहबा राइट आंसर दैट इज द ग्लोब जते बेले स्केच कहूची दैट मींस व्हाट ना जे कोनोसी रफ ड्राइंग को हमें कहि परिबा आपण माने किछि गोटे मेमोरी बेस्ड करके किछि कोन ताको रिमाइंड करिबा लागि गोटे जिंस को मन रखिया पई आपण माने कोन डायग्राम करके रखुचंदी. This is a rough drawing based on the memory and the spot observation that is called as the sketch, not to a scale. But जते बेले प्लान कथा कहूचे प्लान तो किछि भी हेइ पारे हमें कहि परिबा गोटे घरर भी आपण मान देखुचंदी प्लान होउची आपण को जाउची ना गोटे घरर आर्किटेक्चरल प्लान दरकार. That means that this is a detailed drawing of a very small area on a large scale. हाँ नहीं एग्जांपल हमें कहि परिबा the plan of a school building that is a plan. The plan is different, plane is different, but related to the true model of the earth that is the globe. एतिकी बुझी पारिलो देखो ना globe is a three-dimensional spherical model of the earth that accurately represents its shape, size, and the relative positions of the continents and the ocean without any distortion. Clear? Next question jiba. Good morning. Asa. Sonali answer दियो. Your answer मते को what will be the right answer? The line which divides the earth into the northern and southern hemisphere is मु त मानु कहितिली किछि पॉइंट्स ताको त माने निहाती हेलो लाइन पॉइंट कोडा एडा सब रिलेट करैथिली प्रीवियस क्लास रे कहितिली बट एबे पचारछि त मानकु कोन ना द लाइन पचारिछि नॉट अबाउट द पॉइंट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग अबाउट द लाइन which divides the earth into the northern and southern hemisphere. जदि आमे हेमिस्फियर को काउंट करूछे त नॉर्दर्न जते बेला आपण माने ग्लोब को देखुचंती इक्वेटर आपण मान टाणी दोसंती दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फियर दिस इज द साउथर्न हेमिस्फियर दिस इज द ईस्टर्न वेस्टर्न टोटल आमे जानिछे एटा को जदि आपण माने अकाउंट भी न करूछंती कोन आमे जानिछे इक्वेटर कोन करूछे ना इक्वेटर देखुछे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखुछे पोल देखुछे एंड आमे नॉर्थ एंड साउथ पोल बोली दीटा देखुछे हां नै को दिस रीजन इज द नॉर्थ दिस इज द साउथ त जो नॉर्दर्न साउदर्न ए जो पॉइंट उडा कथा कहूची दैट मींस कोन कहूची ना फास्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आमे कोन कहि परिबा कि देखो द अर्थ इज डिवाइडेड by several imaginary horizontal lines and that is called the latitudes. जते बेले imaginary lines कहूची ताको हमें कोन कहिबा ना that is the latitude. एठी बुझी परलो आ जदि गोटे पूरा गोल सर्कल आपण माने कर दोचंती तो राइट आंसर एठी कोन होची कोन हबो सी वेरी गुड दैट इज द इक्वेटर. तो इक्वेटर आपण कोन कहूची ना दिस इज डिवाइडेड बाय सेवरल इमेजिनरी लाइंस एंड ताको हमें कोन कहूची ना लैटिट्यूड्स बोली कहूचे से जो इमेजिनरी लाइंस उडा को से जो इमेजिनरी लाइंस से मानु को हमें कोन कहूचे ना ताको हमें लैटिट्यूड्स कहूचे. सेम जदि इमेजिनरी लॉन्गिट्यूड्स कहिला इमेजिनरी लाइंस इन द लॉन्ग वे कहिला वर्टिकली कहिला ताको हमें कोन कहि परिबा ना लॉन्गिट्यूड्स कहिबा. एतिकी बुझी परिलो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहले त माने कोन बुझछो ना सिया परंकर इंडिया सहित कोन इंडिया रा 8टा स्टेट देकी जाईची ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एटा रिलेट करे परियो जदी इंडिया कथा पचलला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर केतेटा स्टेट देकी जाईची ना 8 स्टेट्स हां नहीं बाकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह के कैप्रिकॉर्न को मार देछि ना. ओके then if the question is about tropic of capricorn ताहले हमें कोन कहि परिबा ताकू हमें डायरेक्टली थ्रू द साउदर्न हेमिस्फीयर रिलेट करि परिबा एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट द इक्वेटर आउ कोन होइला अच्छा आर्कटिक सर्कल कहले त माने कोन बुझिचो मते कुह द बाउंड्री ऑफ द नॉर्थ एंड द फ्रीज जोन जेते बेले हमें आर्कटिक अंटार्कटिक कहूचे आर्कटिक माने सब बेले नॉर्दर्न टू ऊपर को आपण मान जाउछन दैट मींस नॉर्दर्न सहित जेते बेले कनेक्टेड जो फ्रीजिंग जोन सहित जो रीजन रहूचे ताको हमें कोन कहूचे ना ए रीजन को हमें पर्टिकुलरली कहूचे आर्कटिक सर्कल. एतिके बुझी पारिलो. नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा 66 वेरी गुड 66 हाफ डिग्री नॉर्थ सहित हमें ताको कोन ना कंसीडर करि परिबा. लिखि दोची आपण मान कर एठी
Okay, Nandini madam, chalo next question jiba. So the equator is an imaginary line around the middle of the earth located at a 0 degree latitude. It is an equator, sorry, it is an equal distance from the north pole and the south pole. जेतेबेले imaginary line आमे कोन ना ग्लोब रा मझा मझी टना जाईची आमे जदी imagine करिबा ताहाले से आपनकर कोठु ना एठु भी सेम डिस्टेंस रे एंड एठु भी नॉर्थ रु सेम डिस्टेंस साउथ रु भी सेम डिस्टेंस आसुची तो एटा को आमे कोन कहजे ना दैट इज द इक्वेटर एंड इंडिया रे इक्वेटर क्रॉस करी ना हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन मते को व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन। अच्छा प्राइम मेरिडियन कथा आपण माने सुनिथिबे दैट मींस कोन दिस इज द टाइम कीपर ताको हम कोन कहि परिबा ना प्राइम मेरिडियन इज नथिंग बट द व्हाट ना टाइम कीपर बोली हम ताको कहि परिबा। टाइम कीपर दैट मींस कोन हम कहूचे ना जस्ट एज द इक्वेटर is in a 0 degree circle of the latitude, the prime meridian is the 0 degree circle of the longitude. जेते बेले इक्वेटर कथा पचारुछि त माने कोन कहि परिबो इक्वेटर भी मैम केते डिग्री ना 0 डिग्री जेते बेले आपन को पचारछि प्राइम मेरिडियन ताकू भी केते कहउछो ना 0 डिग्री ताहाले भीतर डिफरेंस कोन ना लैटिट्यूड आ लॉन्गिट्यूड रा डिफरेंस जेते बेले आपन माने इक्वेटर कथा कहउछंती दिस इज denote to the latitude जेते बेले आपण माने प्राइम मेरिडियन कथा कहउछंती दिस इज रिलेटेड विथ द व्हाट ना लॉन्गिट्यूड एति की रहउछि कोन ना डिफरेंस बुझी पारिलो ये सन नै मते को 90 डिग्री हे गले आपण मान जानि छंती 90 डिग्री हेले कोन बोथ नॉर्थ जदि हमें गोल बुले दोचे कोन ना बोथ नॉर्थ रे एंड साउथ रे आपण मान 90 डिग्री देखु छंती 180 डिग्री जदि हमें कंसीडर करूचे 0 डिग्री हेला 180 डिग्री 0 तो आपण माने जानिले 0 टा को हमें कोन ना ग्रीनविच मेरिडियन बोली भी हमें कहूचे 0 डिग्री सर्कल जते बेले आपण मान को कहूची ओनली 0 डिग्री ताको हमें कोन कहूचे ना ग्रीनविच स्पेलिंग मिस्टेक हेले कहिबो ग्रीनविच मेरिडियन ताकू भी हमें कंसीडर करूचे बट जेते बेले कोनोसी नॉर्थ माने इक्वेटर कहूची 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री दैट मींस दैट इज रिलेटेड टू द लॉन्गिट्यूड एंड द लैटिट्यूड एति की जिंस कांसेप्ट क्लियर हेबा तो मानकर दरकार एम आई क्लियर वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइम मेरिडियन इज डिफाइंड एज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जदी क्वेश्चन आपण मानको एटे सेम 0 डिग्री लैटिट्यूड पछारी देला जदी सेम एटे आपण मानको कोन ना लैटिट्यूड कहि देला ताहाले आपण मानकर आंसर कोन हे जिवो instead of the prime meridian your answer would be the equator एति की कथा हैला। चलो नेक्स्ट अच्छा मते को the frigid zone lies near जो frigid zone आपनकर अछि ताको हम कोठी रखुचे the frigid zone very good morning MSc कॉलेज जॉब मिलिबो कि टीचिंग लाइन रे बीएड तो करो बीएड टा गोटे बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर एनी टीचिंग एग्जामिनेशन गोटे बीएड करिक रख जेमिति आपण माने जे कोनोसी एग्जाम पकोसन गुरु कहंतिनी ग्रेजुएशन रोची कॉमन तो ग्रेजुएशन निहति दरकार सेमिति ओ मम्मा को मते द फ्रिजिड जोन ता माने हमें कोन कहउचे फ्रिजिड कथा जते बेले आपण मानक माइंड को आसुची जते बेले फ्रिजिड क्वेश्चन आसुची ता माने हमें कोन बुझिबा ना दिस इज नथिंग बट द फ्रोजन वन द फ्रिजिड रो हमें बुझिचे फ्रोजन तो फ्रोजन कहिला हमें कोन कहि परिबा ना द अर्थ इज डिवाइडेड इन कोन इनटू द हीट जोन एंड द कोन ना हीट जोन बेस्ड ऑन द एंगल ऑफ द सनसेट एंड हमें कहि परिबा सन रे को जति अपार्ट करि दोचे ताले आ गोटे जोन होची जोटी हमर बैक साइड ऑफ कोन ना सन रा शैडो जोन को ताको हमें कहउचे दैट इज द फ्रिजिड जोन ता माने हमें कहि परिबा कि जो पोल्स आपनकर रहउची टू साइड रो सपोज दिस इज द अर्थ एंड आपनकर कोन दुई साइड रे आपण मान जानि संती कोन रहउची ना नॉर्थ पोल साउथ पोल जेते बेले साउथ पोल रे आपनकर सन थिबो नॉर्थ पोल विल बी द व्हाट या फिर आपनकर एठी जदी सन रहउची दैट मींस आपनकर जेते बेले सन रेज आसुची नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पसला रे गुटिके इक्वेटर डिस्टेंस आपनकर पड़ी जिवो दैट मींस हमें कहि परिबे कि द फ्रिजिड जोन एट द पोल्स पाखरे ही रहइबो that means it lies between the Arctic circle and the north pole of the Antarctic circle and the south pole कोन Arctic circle north pole ले south pole लो Antarctic circle पाखरे दीटा जाक north pole पाखरे ही से रहिबो एतिके हैला कथा north pole ले रहिले Arctic पाखरे रहिबो south pole ले रहिले Antarctic पाखरे रहिबो this is the difference nothing else एतिके बुझी पारिलो हर नै मते को
जेतेबेले इक्वेटर कथा कहूची व्हाट डू यू मीन बाय द इक्वेटर द सेंटर ऑफ टॉरिड जोन ताकू जदी क्वेश्चन आपन को इंस्टेड ऑफ द फ्रिजिड जोन जदी आपन मान को कोन पचाला ना व्हाट इज द टॉरिड जोन जदी टॉरिड जोन कथा गाइस पचारिला ताहाली और आंसर शुड बी द इक्वेटर ओके so the torrid zone ये अपन को receive करे direct vertical rays of the sun and is the hottest region बोली हमें कहूचे जोटा को इक्वेटर बोली हमें कहूचे यदि डायरेक्ट सनलाइट को रीजन रिलेट करूचे हमें कहि परिबा ट्रॉपिक हैला इक्वेटर हैला पोल्स हैला ताहाले इक्वेटर जदि सबटु लिस्ट कोडा एक्सपीरियंस करूचे देन दिस इज द पोल्स एति की बुझी परिबा क्लियर चलो आ जदि ट्रॉपिक्स पचाची ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हैला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हैला मींस द ट्रॉपिक्स are the area between the kona apangra between the tropics and the polar circles in the temperate zone that is characterized by the moderate temperature this is basis of the temperature ame taku characterize karuche clear chalo next good morning everyone good morning so the frigid zone next one dekho the total number of longitudes are acha total number of keteta apangra longitudes achi देखो longitudes माने आपन को कोन कहूची ना longitude itself means आपन को meridians होना नहीं मत देखो कोन कहूची ना it is the meridians जेतले meridians आपन मान को कहूची either these are the meridians or the semicircle that कोन ना run from the pole to pole आपन मान कर जेते बेले pole हमें काउंट करूचे pole को हमें माने टानुचे होना नहीं मत देखो suppose this one is your what na this one is a pole जेतेबेले एठ हमें pole नु pole को टानुचे like this and again this देखिथिबे आपण माने मैप रे चित्र कला बेले तो आकु हमें कोन कहि पारुछे मते कुओ को डिग्री रे आपण कर ये टना जाउची ये तो हधा रहि गला हमें कहूचे कोन ए जे आसी 90 डिग्री देन आसले 180 देते पूरा गोल कवर अप हो जाउची नॉट दैट एमिति आपण को तो ये तो एमिति कवर अप हुए ना एक्चुअली आपण को एमिति कवर अप हुए ना एमिति कवर अप हुए ना दैट मींस कोन कहूची ना ये आपण को 360 डिग्री कोन कहूची ना 360 दैट मींस सॉरी डिग्री कहूची दैट मींस द since the earth is a sphere हमें कहि परिबा there is one meridian of every degree कोन जेते आपण माने मेरिडियन काउंट करसोंदी तो सब डिग्री रा सेम सब मेरिडियन रा सेम डिग्री रहबो देयर आर 180 longitudes to the east and 180 to the west तो 180 मिसी गले आपण कर केते ना 360 जदी ओनली स्पेसिफिकली ईस्ट को पचारला ओनली स्पेसिफिकली वेस्ट को पचारला ताहाले आपण माने 180 कंसीडर करि परिबे जदी आपण मान को पचारला टोटल ऊपर in case of the question is asking about the east only 180 degree west only again 180 degree but in total पचारची ना total number of longitudes then that is add करि दबो 360 degree total longitude बुझा पड़िला को मते ये समनो yes next question जीवा 180 east and 180 making it a full circle 360 degree around the earth next mate को the Antarctic circle is located in अच्छा Antarctic कहली Arctic कहली तो Antarctic circle आपण मान को कोठे मिलिबो देखिबा को कहिला मते टिके location of the Antarctic circle that means the earth is divided into two halves by the equator that आपण मान जानि थिबे टोटल केतेटा गोल करी मो हाथ कटलेन गोल करी आसा आज गोल भी होनी छड़ा तो इते बेले हम माने इक्वेटर एठी टाणी देले दीटा पोल्स रे डिवाइड हे गला एक्वा में नॉर्थ कहूचे एक्वा में साउथ कहूचे हन ना इक्वेटर ही डिवाइड करछ आपण कर पोल्स बट एठी कहछि इते बेले आपण कर डिवाइड कहछि इक्वेटर समान एटा को केते डिग्री रहउछि आपण कर 0 डिग्री हन नहीं मते को 0 डिग्री रहउछि दैट मींस हमें कहि परिबा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न रहउछि कोन ना नॉर्दर्न एंड साउदर्न तो रहउछि क्वेश्चन रे कारण हमें केते बेले भी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न को काउंट करिबा नहीं तो नॉर्दर्न न है कि साउदर्न कोथि पई हबो कारण नॉर्दर्न को हमें रिलेट करछे कहा सहित जेते बेले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कथा कहउछि आपण माने कहिबे दिस इज द आर्कटिक जेते बेले साउदर्न कथा कहउछि सेते बेले हमें ताको कोन कहबा ना अंटार्कटिक गोटे एन रा डिफरेंस गोटे एन लगे दे कि अंटार्कटिक से मन रखि दबो आर्कटिक करियो ऊपर तो रहिला कोन ना वन एंड ओनली साउदर्न हेमिस्फीयर तो मानकर आंसर कोन आस्तिला बी आस्तिला तो वेरी गुड गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा आसो मते कुहो
Grid is a network of. अच्छा grid कौन? Grid कथा में कहूँ What do you mean by the grid system? The grid अपन मान जानी संधि की. This is the grid is a mathematical basis of a कौन ना GPS and navigation ताको हमें relate करे परिबा. That means हमें कही परिबा कि जेते बेले GPS and navigation work करे. That means the parallels of the latitude and the meridians of the longitudes. So both GPS अपन कर गोटे जगह काम करिवनी. से both latitude and longitude काम करिवो. That means both latitude कौन ना both latitude and both longitude सहित अपन कर GPS work करे. तो इंडिया रो own GPS रो ना किए मते कहि परिबो. इंडिया रो रीजनल ओन जीपीएस रो नाम मते किए कहि परिबो. एनीवन? दैट इज द नाविक. निरंजन, अजीत, नंदिनी कोन कहउछो? दैट इज द नाविक वन. जेते बेले सेटा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हेनी बट इंडिया रो ओन रीजनल नेविगेशन सिस्टम रो ना रहउची नेविगेशन सैटेलाइट रो ना रहउची नाविक. क्लियर? जिबा नेक्स्ट. द राइट आंसर कोन होबा आपन करा ना पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. Next मते which heat zone receives the maximum amount of heat? को heat zone त मानकु कहितली heat zone आपनकर कोउट रहइबो northern and southern को बोले त आपनकर कोन heat zone रहइबो काना sun रो rays indirectly पडुची या फिर हमें कहि परबे sun shadow zone में से रहउची बट एठी आपन मानकर आंसर कोन हे जिवो डायरेक्टली जे sun रा कोन ना एक्सेप्ट करूची ताहाले हमें कोन कहि परिबा ना आपनकर जो इक्वेटर को मु आ गोटे ना दिबे कहितली. इक्वेटर को आउ कौन कहितली? वेरी गुड नंदिनी. इक्वेटर को कहितली ना टॉरिड जोन. The torrid zone that is located between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. जेते बेले टॉरिड कथा कहूची this is located between what? ना Tropic of Cancer and Capricorn. एतिके कहि परिबा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को नै कि आपण माने कोन कोन ना दैट इज द टॉरिड जोन. जेते बेले आपण को पचारिबो व्हाट इज द टेम्परेट जोन ताहाले हम कोन कहि परिबा ना लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड द पोलर सर्कल. जेते बेले टेम्परेट कथा पचारि छी ये ट्रॉपिक एंड कोन बिटवीन द ट्रॉपिक एंड द पोलर सर्कल्स. The polar zone and tropic भीतर रो डिफरेंस को हमें कहू जे दैट इज व्हाट ना temperate zone, frigid zone. Already told you the location between कोन located between the polar circle and the poles. Arctic zone कहले this is simply हमें कहि परिबा the another name of the north arid zone. Arctic कहि छी कोन कहबो ऊपर को Antarctic कहले तळु को ता माने ऑटोमेटिकली आपण माने नॉर्थ एंड साउथ कहि देबे हो ना नहीं. नेक्स्ट मते को the time difference between Greenwich and India is the time difference between the Greenwich and India. जेते बेले time difference आपण को पचारुची कोन ना इंडिया रा टाइम वर्सेस कोन IST versus GMT. IST versus GMT. तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वर्सेस कोन ना Greenwich टाइम भितरे माने डिफरेंस कोन को टाइम इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द अर्थ रो रोटेशन. हां नै मते को हमें टाइम को केमिति कैलकुलेट करूछे टाइम को हमें अर्थ रो रोटेशन अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूछे. दैट मींस जेते बेले कहूची 5 hours 30 minutes एटा सब बेले मन रखो ना टाइम इज इक्वल टू अर्थ रोटेशन. yes or no guys? 5 hours 30 minutes behind, 5 hours 30 minutes ahead, 6 hours ahead, 4 hours 30 minutes ahead. ताहाले हमें राइट आंसर कहा को कहि परिबा केते बेले पछुआ त चलिनी ये आपनकर सब बेले आगुआ चलिबो. दैट मींस आंसर 5 यस प्लस हबो सब बेले कोन हबो. वेरी गुड नंदिनी. 5 hours 30 minutes ahead हबो बिकॉज़ इंडिया रा स्टैंडर्ड मेरिडियन इज 82 डिग्री समथिंग. आपन कहितली 82 डिग्री 2 मिनिट समथिंग कहितला नै. सो ताकू भी मन रखिबो केमती कोन कैलकुलेट करा जाय डिफरेंट थिंग कैलकुलेशन आपन करिवे 82.5 डिग्री ताकू इनटू 4 टाइम्स करिवे समथिंग डिवाइडेड बाय माने टिके भूली जाउची तार प्रोसीजरटा केमती कढा जाय बट स्टिल देखि दियो. सो इंडिया इज टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन. कंप्लीट आंसर आपन रहउची इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 hours and 30 minutes ahead of the greenwich. ओके चलो नेक्स्ट मते को द 0 डिग्री मेरिडियन. 0 डिग्री मेरिडियन इज आल्सो नोन एज जेते बेले 0 डिग्री मेरिडियन कथा कहउची दिस इज आल्सो नोन एज कोन हबो जेते बेले आपन कहली टॉरिड जोन कोटा को आपन माने जानि देले एबे मते को 0 डिग्री मेरिडियन जेता 0 डिग्री त आपन कर यूनिवर्सल
दैट मींस कोन होची ना कोन कहूची वी ऑप्शन केमिति रे इक्वेटर को आपण माने कोन जो 0 डिग्री मेरिडियन बोली जानछंती इक्वेटर को 0 डिग्री मेरिडियन केते बेले त मान को कहली मते कहला डिके केते बेले कहली 0 डिग्री लैटिट्यूड कहिची 0 डिग्री सर्कल कथा कहिची मेरिडियन हो 0 डिग्री मेरिडियन हो इक्वेटर जते बेले कहिबो मन रखिथिबो 0 डिग्री लैटिट्यूड कथा कहि परिबा आपण माने 0 डिग्री लैटिट्यूड या फिर हमें कोन ताकू ना 0 डिग्री सर्कल कहि परिबा हैला बट हियर इज द राइट आंसर इज योर प्राइम मेरिडियन वेरी गुड मनोई कोन सॉरी मोनी वेरी गुड कोन हबो ना आपनकर प्राइम मेरिडियन इट पासेस थ्रू द ग्रीनविच इंग्लैंड देकी अर्थ को डिवाइड करिछि इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर एते की बुझी पाला हेमिस्फीयर डिवीजन ये करिछि स्टैंडर्ड मेरिडियन दैट रेफर्स टू द स्पेसिफिक अबाउट द लॉन्गिट्यूड एंड द कंट्री चूजेस टू एफेक्ट्स एट एनी लोकल टाइम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मते कुहो ना कोन कहिछि सॉरी आसो तो जदि आपण माने टीचिंग एग्जामिनेशन टाइम प्रिपेयर करछन्ती द्रोड बैच आपण माने जॉइन कर परिबे फॉर एसएसबी टीजीटी 1 year validity of the 1499 रहिछि प्राइस प्रारंभ बैच जॉइन कर परिबे दो स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेटी एंड एटी विन 1 year validity of the 1199 द संस्कृत बैच एसएसबी टीजीटी 1 year validity of the 1499 भी नै परिबे हेल्पलाइन नंबर देछि आपण माने कॉल करिके क्वेरी सॉल्व कर परिबे आउट ऑफ दैट see as we move from the equator towards the pole jete bela ame equator this is what equator and ye apan kar kon hochi na poles these are the north south pole jete bela equator ko ame pole side को जाउछे equator ru ame कोन pole side को जाउछे कोन पचारिछि now towards the pole the sides of the parallels of the latitude the parallel of the latitude that means this one is the latitude okay latitude latitude तो लैटिट्यूड आपनकर कोन हबो जते बेला हम एडे पोल एड को जाउचे या फिर एड को पोल एड को आसुचे तो ये इंक्रीज हबो ना डिक्रीज हबो या फिर कांस्टेंट रहइबो मते टिके कहिलो लैटिट्यूड एड को आपन सॉरी साइज ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आपन मानकर कोन हबो जने आंसर देइचंदी इंक्रीज हबो इज दैट इंक्रीज केबे हुए इट नेवर हैपेंस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर एठी त मानकू मूव अवे ऑफ द इक्वेटर कहिची हन नै मते को क्वेश्चन कौन देछि ना we move from the equator move to the equator कहिनी हन नै यदि to the equator कहबा increase हबो from the equator कहले तार ऑपोजिट हे जिवो डिक्रीज हे जिवो क्वेश्चन टिके भल से पढि दियो बाबा क्वेश्चन टिके भल से पढो तापर आंसर दियो तर नै मु वेट करिछि ना आंसर तो आराम से दियो हैला काहे कि बिकॉज़ द अर्थ इज अ ग्लोब हमें जानि छे द अर्थ इज अ कोन and just like a geolid कहि परिबा what is the geolid now this is a bulging of the equator and the flattened of the poles हन नै poles से आपनकर फ्लैट देकी थाय बट इक्वेटर आपनकर कोन ना bulging कंडीशन रे थाय that is कोन ना bulging means कोन कहूची ना एमिति हेकी थाय एमिति फ्लैट हेकी नाही आपनकर ए टाइप रो शेप हेकी थाय सो इन दैट कंडीशन हमें कहूचे जते हमें ता दूर को जाउचे से कमी जिवो जते टुवर्ड्स जाउते से बढ़ी जिवो दैट्स इट हन नै हां टेंपरेचर आपनकर डेफिनेटली इंक्रीज हो क्लियर नेक्स्ट चलो मते को द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट सर्कल ऑफ द लैटिट्यूड एज वी गो नॉर्थ और साउथ कोन जते बेला हमें नॉर्थ और साउथ दिस आर द इक्वेटर हन नै ताक जते बेला हमें याडे याडे पळेबा ताली कमी कमी जिवो जते बेला पाखु को आसबा तले बढ़ी बढ़ी जिवो ऑब्वियसली कोन देखु ना गोलटा आपनकर एठी सबटु बड़ देखा होची याड को छोट देखा जाउनी तले याडे हमें पळेबा छोट देखा जिवो याड पळेबा छोट देखा जिवो तले पोल रु इक्वेटर आड को जिवो सेते बेला आपनको इंक्रीज करिवो हैला नेक्स्ट चलो मते कुहा ना द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया ऑलरेडी त मान को कहिची स्टैंडर्ड मेरिडियन कथा जते बेले भी पचारिबो 82 डिग्री ईस्ट कथा मने पकेइबो नाही कोन कहिची ना सॉरी वेस्ट कथा माइंड रे रखिबो नाही कोन कहिची ना 82 डिग्री 30 मिनिट ईस्ट एठी आपन को कंफ्यूज करबा लागि दीदीटा सेम ऑप्शन दबो बट वेस्ट इज नथिंग ईस्ट सहित रिलेट करबो दिस इज द आईएमटी द इंडियन स्टैंडर्ड सॉरी आईएसएम that is IMT भी अपन माने कहि परबे इंडियन मेरिडियन टाइम और द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सॉरी नॉट IMT ISM इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इट पासेस थ्रू कोठी जदी पचारा गला को जागा रे इंडिया रा से पास करिछि के मते कहि परिबो कोठी पास करिछि जदी के पचारला के मते कहि परिबो इंडिया रा उत्तर प्रदेश देकी पास करिछि मिर्जापुर देकी कहि परिबो की it was chosen because of a multiple of कोना ना आपनकर 7.5 डिग्री
which is equal to the 30 minutes आपनकर सब बेले ताकू देकी कवर अप करे exactly 30 minute gap रे से आसी हैला yes उत्तर प्रदेश रा मिर्जापुर लिखि दउची next question mate kuha local time of a place is fixed with respect to the local time kono na local time of a place is fixed with respect to the moon's position sun's position at its highest point stars position distance from the pole तो कौन हम राइट आंसर मते कहलो मून्स रा पोजीशन कथा एटी पचाची आउ पचाची कोन ना फिक्स्ड लोकल टाइम so local time at a place is fixed with respect to the sorry moon's position नहीं but मते को आंसर कौन हम एठी अपन मन को moon's position को हमें कहि परिबा कि ना lunar calendar according हमें जदी देखुचे it is कोन ना calculate moon रा position को नै हमें कोन calculate करूचे अमावास्या हैला ग्रहण टाइम हैला आपनकर ए कैलकुलेट कोन करछे ना लूनार आपनकर ओशन ना टाइड्स मान को कहूची जुआरा से भट्टा से हन नै तो पूर्णिमा अमावास्या ए माने नै कि पूर्णिमा अमावास्या कहा को नै कि मून को नै कि कैलकुलेट हुए तो मून को जदे रिलेट करिबा आपन माने लूनार कैलेंडर अकॉर्डिंग ताको टाइड सहित कैलकुलेट टाइड सहित रिलेट करिवे बट जते बेला आपन को पचारुची फिक्स्ड रेस्पेक्ट टू टाइम सब बेला हमें कहा ना सन रा पोजीशन को नै कि टाइम को फिक्स करि कि रखुछ एतिके क्लियर डी कहि देला रे distance from the poles अरे poles नाही रे local time of a place local time आपनकर दिन मुंडा ऊपर सूर्य अछंदी अरे दिन 12टा हे गला डाहान को पळेले अरे यार ये तो सकाळ को अछि बा को पळेले आपण माने कोन जानछन ईस्ट एंड वेस्ट जो दिग को जाउछन आपण माने कहउछन 12टा रु एपट को 12टा रु सेपट को तो लोकल टाइम आपण कैलकुलेट करछन केमिति ना सन रा मूवमेंट को अकाउंट करी कि लोकल टाइम को आपण माने कैलकुलेट करूछन एतिकी जिंस बाकी रहिला आपण मानकर स्टार पोजीशन सन पोजीशन आपण मानकर हैला कोन लोकल टाइम स्टार पोजीशन कहले हम कोन कहउचे ना द सिडरियल टाइम व्हाट इज द सिडरियल टाइम मते को ना आपण माने कहि परिबे एस्ट्रोनॉट माने सन रा पोजीशन को नै के जोटा टाइम आपण माने एस्ट्रोनॉट्स माने कैलकुलेट करन ताको हम सिडरियल टाइम बोली कहउचे रिलेटेड विथ द एस्ट्रोनॉट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पोल जो आंसर दोउचे ताको हम कोन कहउचे ना लैटिट्यूड केते डिग्री लैटिट्यूड रो छ केते डिग्री लैटिट्यूड माने टुवर्ड्स छ और फ्रॉम छ तो बेसिकली पोल्स आपण मानकर कोन डिसाइड करे ना लैटिट्यूड से डिसाइड करे क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जीबा लोकल टाइम सॉरी सन यस मोनी नेक्स्ट अते को हाउ मेनी टाइम जोन्स आर देयर इन द वर्ल्ड टोटल वर्ल्ड रे केतेटा टाइम जोन आपनकर अछि मते की आंसर दे परिबो how many time zone are there in the world the world is divided into 24 time zones हम नहीं तो each spanning हम कहि परिबा 15 degree circle of longitude सहित जाउची that means 360 degree by 15 is equal to 24 okay ता अकॉर्डिंग आपण माने कैलकुलेट करि परिबे am I clear देखो हमें देखिबा सम कंट्रीज लाइक आपण मानकर रशिया एग्जांपल नै परिबे हैव मल्टीपल टाइम जोन्स बिकॉज़ ऑफ देयर मैसिव लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेच द इंडिया रे हम कहउचे इंडिया रे आपण माने जो जगह को जानतु आपण माने गुजरात को जानतु या फिर आपण माने सेठी कोन टोटल जो आपनकर सेवन सिस्टर आपनकर स्टेट अछि सेठी कि आपण माने जानतु मेघालय जानतु मिजोरम जानतु व्हाटएवर आपनकर एठी जति टाइम सेठी भी सेति ही टाइम हेतिबो हम नै मते को बट जदी रशिया को आपण मान देखिबे तारा वेरी करिवो बिकॉज़ तारा लैटिट्यूडिनल डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन ही आपनकर डिफरेंस करूची तो एटा डिपेंड कहा पर करिवो ना जहार जति की अधिक लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस माने डायरेक्शंस माने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेच अधिक रहइबो सेटा रे अधिक टाइम जोन आपण मान देखियो पाइबे जस्ट लाइक रशिया एग्जांपल नै परिबे हन नै चलो नेक्स्ट मते कुहो यस नेक्स्ट पाखा पाखा हमर देखो इंडिया मेजरली लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन केते रहउची दीज आर द लाइंस ओके एंड दिस इज द लाइन दीटा लाइंस भीतर डिफरेंस भीतर आपन रहउची बट जते आपन माने रशिया कथा कहउचंती अदर माने मेजरली आपन माने रशिया को अकाउंट नै परिबे त केते बड़ रहउची सो दैट हम ताको कहबा लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन जहार जति अधिक स्ट्रेच तार टाइम सब बोले वेरी करिवो नेक्स्ट कोन कहउची मते कहलो अच्छा प्लेसेस टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी व्हाट ऑफ ग्रीनविच टाइम मते कुह द डायरेक्शन कोन कहउची मते कुह places to the east of Greenwich will be what of Greenwich time
कौन रहिबो ये आपनकर ahead रहिबो behind रहिबो at the same time रहिबो or the one day behind रहि परिबो मते कुओ ना places to the east and Greenwich will be always कोन ना ahead रहिबो because the earth rotates eastwardly यदि eastwardly करिबो ताहाले से आपनकर आगु को रहिबो मते कुहो आमे जते बेले लाइन टाणु छे केमिति these are the longitudinal lines होना नहीं एमिति टणा होची तो east टू west को एमिति बुलुची ना नहीं मते कुहो eastwardly towards east west to east को हमें कहि परिबा east आडू से बुलुची होना नहीं so that is the place of the कोन east जते बेले हमें कहि परिबा like Japan and India को जदि हमें कंसीडर करूछे आपण मान जदि जापान एंड इंडिया को कंसीडर करी कि सूर्य को देखुछंती ताहाले सूर्य आपणकर फास्ट बुलुची कोन now we can see the sun very fast therefore I कहि परिबा the time is ahead of the कोन fastly compared to the Greenwich को जदि हमें कंपेयर करछे ताले इंडिया रे कोन फास्ट बुलुची ओके नेक्स्ट चलो मते कुह मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड अच्छा मैप रे आपण माने देखिथिबे किछि नेचुरल फीचर्स रो माने पिक्चराइजेशन तो मते को जते बेले किछि नेचुरल फीचर्स आपण माने देखुचंदी मैप रे से आपण को कोन शो करूछि देखो we know the maps are classified based on the type of the information like they कोन ना emphasize different mountains पे गोटे अलगा कलर शो करे वाटर पे गोटे अलगा सोर्स कलर शो करे तो डिफरेंट टाइप रे आपण मानकर कलर आसे बट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द मैप्स रा क्लासिफिकेशन जते हमें करछे नेचुरल फीचर्स को नै की केमिति करछे मते को पॉलिटिकल मैप्स करूछे की ना पॉलिटिकल मैप्स जते हमें करिबा दिस शो द मैन मेड बाउंड्रीज होना नहीं जते बेले नेचुरल कथा कहिछि जते बेले आपनकर ग्लोब्स तयारी हेइतिला थोड़ी ना आपनकर इंडिया थिला ना आपनकर जापान थिला ना रशिया थिला ना यूएसए थिला ना ऑस्ट्रेलिया थिला व्हाटएवर द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द कंट्रीज से माने तो से आपनकर फॉर्म हेइ नथिले सेते बेले ताला आपन नेचुरली थिला तापर आपनकर बाउंड्री कमिटी जेमिति ओडिसा रे बसिके आपनकर कोन ना फिलिप डॉफ कमिटी रे सेपरेशन हे गला वेस्ट बंगाल बिहार एंड ओडिसा ठीक सेमिति आपनकर अलगा कंट्री कंटिनेंट्स माने भी सेपरेट हेइचंदी बट दीज आर द आर्टिफिशियल दीज आर द मैन मेड द पॉलिटिकल मैप जते बेले पचारिबो देन आपण मानको माइंड आसीबो ना पॉलिटिकल मैप्स आर द मैन मेड मैप बट हमें कहि परिबा द फिजिकल मैप्स दैट इज आल्सो नोन एज व्हाट ना रिलीफ मैप्स बोलिबी जदी इंस्टेड ऑफ द फिजिकल मैप माने रखो जदी क्वेश्चन आपण को रिलीफ मैप्स देइथिबो कोन ना रिलीफ मैप्स देइथिबो ताहाले भी आपण मानकर आंसर आसीबा दरकार कोन ना फिजिकल मैप और द रिलीफ मैप इज द नेचुरल कोन ना फीचर्स ऑफ द अर्थ क्लियर दूसरे में कहि परचे दे शो द नेचुरल फीचर्स सच एज द माउंटेन्स द नेचुरल वन द प्लेट्यूज आर द नेचुरल वन द प्लेन्स द रिवर्स द ओशंस so डिफरेंट टाइप ऑफ आपनकर नेचुरल थिंग्स आपनकर शो करचे दैट इज द फिजिकल मैप और द रिलीफ मैप when the question is asking about the thematic map ताहाले केबे किए मते कहि परियो what do you mean by the thematic map like population climate very good like the population climate these are the artificial one okay मते को होबे thematic maps माने कोन कहूची that means the themes like हमें कोन कहि परिबा ना these are the focus on the specific information or the themes through thematic हला like हमें कहि परिबा road maps रेनफॉल मैप्स इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन जते बेले पर्टिकुलरली गोटे कलर हे गला से कलर टोटल टाको भरि दिया गला जणा पड़ी गला कि को जगह रे आपण मानकर सपोज गोटे एमिति कोन ना रेड सिंबल हेची जो जगह रे आपनकर एमिति सिंबल हेची हमें जानछि सेठी गोटे भलो भलो इंडस्ट्रीज अछि तो टोटल टाको हमें कोन कहउछे ना दैट इज द थेमेटिक वन दैट मींस कोन ना थीम्स थ्रू आसिला थेमेटिक दैट मींस दैट कैन बी अ मैप over the road map, over the rainfall, over the industrial revolution, industrial zone in different patterns. जते बेले कहूची what is the sketch maps मते कहला sketch maps माने आपण मान को कोन कहूची that is a rough drawing drawn within a scale ताको हमें sketch करबा जे कोनोसी आपण माने drawing करछन ताको हमें scale करबा usually based on a memory just to कोन keep it in your mind आपण माने जहां भी डायग्राम कर दोछन इज द sketch okay कोनदी ना पुलिस माने तले इन्वेस्टिगेशन करंदी कि विटनेस अछि ताकू धरि केना आई विटनेस को कुह से कहा को देखितिला तार गोटे परफेक्ट स्केच बनेबो दैट मींस आपण मने पके कि किछि जिंस करूचंती या फिर गोटे जिंस करूचंती मने रखिबा पाई ताको हम कहूचे स्केच मैप एति कि बुझि पानला यस चलो नेक्स्ट मते कुह these are the physical maps are specifically designed to show the earth natural features
नेक्स्ट मते कुआ ए मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व जते बेले आपण माने मैप शो करूची कहार ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट ताहाले मते कहिलो कोन कहिथिली ना को टाइप रो फॉरेस्ट आपण कर आसीबो व्हेन ए मैप इज डेडिकेटेड टू ए सिंगल सब्जेक्ट ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट इट फॉल्स अंडर व्हाट ना फॉल्स अंडर द थेमैटिक मैप्स कहिथिला नै मते कुआबे थेमैटिक मैप पड़े आसीबो होना नहीं जेतले फिजिकल मैप कथा कहिली कोन कहिथिली ना फोकस ऑन द टोपोग्राफी दैट मींस द लैंडफॉर्म ऊपर आसीबो फिजिकल मैप not the specific resources like the vegetation the forest the soil the climate एगुडा के आपन जेते बेले कोन से स्पेसिफिक टॉपिक आसी जीवा स्पेसिफिक कैटेगरी आसी जीवो सेते बेले हमें कहिबा दैट इज द थेमैटिक वन द थीम वन पॉलिटिकल मैप ऑलरेडी द मानु कहि देची फोकस ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बाउंड्रीज द थेमैटिक मैप आपन थीम एंड द राइट आंसर रिलीफ मैप आपन मान को कहिली होना नहीं रिलीफ मैप कहले त माने कोन बुझिबो मते कुआ ना दिस इज द सिंपल अनदर नेम ऑफ द फिजिकल मैप तो रिलीफ मैप जहां फिजिकल मैप भी सही है इक्वल नेक्स्ट मते कुहा ना ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग अच्छा जेते बेले मैप रे आपण माने ब्लू कलर गाइस देखा जाय मते कहला ब्लू कलर ता कोथि पय देखा जाउथबो ब्लू कलर आपण मैप रे कोथि पय देखा जाय वाटर बॉडीज माउंटेन प्लेन एंड प्लेट्यूज देखो to make the map very universal हमें कोन कहि परिबा जते बेले जे कोनो सुडी छोटो पिला देखिले भी कलर देखि जानि परिबो माने यूनिवर्सली रीडेबल कंडीशन हमें ताको रखिबा को चाहूजे स्पेसिफिक कलर्स आपनकर डिफरेंट टाइप्स रे दिया जाय जदी सब गोटे कलर रखि दिया गला ताले हमकु चिन्हिबा को भी डिफिकल्ट हबो एंड हमें कंफ्यूज भी हेबा सेथि लागि सब बेले वाटर बॉडीज को कोन ना ब्लू रिवोल्यूशन रू ब्लू कलर फॉर द वाटर बॉडीज blue is used for the ocean for the seas for the lakes for the river for the माने लाइट ब्लू कलर आपनकर लाइट ब्लू शेडेड आपनकर फिल अप करा जाय माउंटेन्स हेले आपन माने कोन जानछन जते बेले माउंटेन करिवो ये को कलर आसीबो के मते कहि परिबो ना मैम माउंटेन हेले ब्राउन कलर जते बेले डिफरेंट प्लेन्स हमें अकाउंट करछु ताको हमें को कलर देखुछे ना हरियाली ग्रीन कलर जते बेले प्लेट्यूज को हमें डिस्टिंग्विश करछु ताको कोन ना यूजुअली आपनकर ये येलो कलर रे दिया जाय these are the universal कोन and usually yellow color रे प्रोवाइड करा जाय नेक्स्ट क्वेश्चन मते कुह ए कंपास इज यूज्ड मैप रे हमें कंपास भी यूज करू छे मैप को रीड करिबा लागि कंपास भी यूज होछ होना नै मते कुह कोथि पई ना नेविगेशन पई दैट मींस आपण माने कोन कहि परिबे दैट टू शो सिंबल्स टू फाइंड द मेन डायरेक्शन टू मेजर डिस्टेंस टू फाइंड अल्टीट्यूड सिंबल आपण माने कर हबनी दिस इज द जॉब माने आपण कर सिंबल रीड करिबा कंडीशन का दिस इज द जॉब ऑफ द माने आपण कर जेते सब माने लीजेंड्स माने रहिले से माने ताकू कोन सिंबल उडा को देबे सिंबल को चिन्हिबे बट टू फाइंड द मेन डायरेक्शन नेविगेशन पई हमें कहि परिबा द मैग्नेटिक कंपास हैज अ नीडल that always point toward the magnetic north and south direction तो जदी कंपास आपण माने देखिथिबे एमिति एमिति हलुथबो नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन रे थिबो that means north and south opposite आपण कर ईस्ट माने ईस्ट एंड वेस्ट रहिथिबो आपण माने इजीली जानि परिबे सपोज एमिति बुली गला that means एपड ईस्ट एपड वेस्ट एमिति बुली गला एपड ईस्ट एपड वेस्ट बुलिला ईस्ट वेस्ट तो ए अकॉर्डिंग गोटे डायरेक्शन आपण माने ईस्ट टू वेस्ट पांतो या फिर नॉर्थ एंड साउथ पांतो आपण माने जानि देबे कि एक्चुअली डायरेक्शन कोठी तो डायरेक्शन आपण कर आसीबो कोन ना कंपास एतिकी जिंस क्लियर क्लियर चलो नेक्स्ट मते कुओ ए स्केल इज नेसेसरी फॉर गोटे स्केल आपन को निहाती दरकार कोथि पई गोटे स्केल आपन मान जानि संती स्केल आपन को स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑफ द सोन ऑन द मैप होना नहीं बट जते बेला हमें किछि स्केल यूज करू छ त माने कोन करबा को ना मैप को चेक करबा लागे नै मते कुओ मैप रो ही डेफिनेशन आपनकर स्केल हमें कहि परिबा ना ए मैप इज a representation of the earth surface drawn according to the scale according to a scale so without a scale we cannot draw anything or a draw cannot be called a map without having a particular scale होना नहीं मते को केते डिग्री ईस्ट अछि केते डिग्री वेस्ट अछि केते डिग्री लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ए सब जिंस आपनकर स्केल पे डिपेंड करे होना नहीं yes the sketch already told you but the sketch apan karo without a scale sketch can be kona possible but without a scale a map is cannot be kona possible clear chalo next mate ku ho again कहूची ओडिसा टीचिंग एग्जामिनेशन पर जदी प्रिपरेशन करसोंदी एसएसबी टीजीटी बैट 1 ईयर वैलिडिटी सहित 1499 प्राइस नै परिबे प्रारंभ बैच जेटीएटी पर जदी प्रिपरेशन करसोंदी 1 ईयर वैलिडिटी सहित 1199 मिल परिबे एंड हमर
संस्कृत पेड बैच भी अवेलेबल अछि जोडा कि ऑलरेडी स्टार्ट हे सारी रानी आपण माने 8280532825 को कॉल करी कि क्वेरी सॉल्व करी पारे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा को मते को व्हिच मैप प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन को मैप आपण माने जदी शो करछन आपण माने पढुचंदी स्टडी रूम रे डिफरेंट टाइप्स रो मैप लागि छि फिजियोग्राफिक मैप चेन लागि छि पॉलिटिकल मैप लागि छि बोथ फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया सब आपण माने लगै छथि बट बेसी आपण कोटा को देखुछन बेसी आपण माने कोटा को देखुथिबे मते को ना व्हिच मैप प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन ना स्मॉल स्केल मैप लार्ज स्केल मैप स्केच और ग्लोब देखो दिस आर द वेरी कॉमन पॉइंट जोटा कि सब स्टूडेंट माने कंफ्यूज हुआ ना स्केल माने कोन ना दैट रिफर्स टू द रेशियो कोन ना रेशियो एंड थिंक ऑफ द माने ऑफ इट एज अ फ्रैक्शन माने आमे माने जेमिति भाबुजे ता अकॉर्डिंग ए जगह रे एटा प्रेजेंट रहिबा कथा जदी टिके घुंची जाउची अरे एटा तो इंडिया रे पोजीशन होची एतिकी डिग्री ईस्ट रो एतिकी डिग्री वेस्ट एतिकी डिग्री नॉर्थ रो एतिकी डिग्री साउथ जदी याठू बाहर रहला ता माने से मैप टा भूल अछि हना नै मते को ताहाले हमें कहि पारे जदी स्मॉल स्केल ने मापिबा ताहाले हम कोन परफेक्टली पाई परिबा की हमें स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल नहीं मापुचे स्मॉल एरिया को हमें लार्ज स्केल ने मापी परिबा सो दैट हमें कहि परिबा द एरियाज लाइक आपनकर कोन विलेज हैला स्पेसिफिक टाउन हैला तार भी आपनकर केते डिग्री माउंट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब थाए तो ए सब जिंस आपनकर लार्ज स्केल में मापुचे बट स्मॉल एरिया को दैट कैन गिव अ appropriate a particular information about what we are needing clear next देखो कौन कहि छी what is the arrow pointed with the letter n on a map indicated the n लिखि छी माने कोन लिखिबो n थोड़ी ना आपन को नाक को देखैबो n means त आपन को नोज नुह n means the east हबनी n means the west हबनी कि n means the south हबनी that means the maps आपन को कोन करछि ना contain an arrow marked with the letter n called the north direction or the north line clear no more explanation needed next mate kuha the four major direction north south east and west are called ए चारटा डायरेक्शन को हमें कोन कहूचे जतबे मैप रीडिंग करूचे कोन करूचे ना नेमिंग डायरेक्शन these are the naming direction but what the direction are classified into two main groups of the vegetation intermediate points हमें तले करूचे these are the directions हमें कहूचे between the main ones माने north northeastern कहूचे ना नॉर्थ ईस्टर्न हैला साउथ ईस्टर्न हैला साउथ वेस्टर्न हैला नॉर्थ वेस्टर्न हैला तबले ईस्टर्न वेस्टर्न मिसी जाउची नॉर्थ सहित ईस्ट मिसुची साउथ सहित वेस्ट मिसुची साउथ सहित ईस्ट मिसुची नॉर्थ सहित वेस्ट मिसुची तो ए सब रक हमें कहूचे दीज आर द इंटरमीडिएट पॉइंट नॉर्थ ईस्टर्न हैला साउथ वेस्टर्न हैला होना नहीं नॉर्थ वेस्टर्न हैला साउथ ईस्टर्न हैला तो एडा को हमें कोन कहूचे इंटरमीडिएट पॉइंट्स जेतबे आपन कहूची द कार्डिनल पॉइंट्स दैट मींस कोन कहूची ना ओनली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ए मान को कार्डिनल पॉइंट बोली कहूची जतबे ऑर्डिनल पॉइंट कहूची ना माने कोन तार अपोजिट हेतिबो की आपनकर ए जो इंटरमीडिएट पॉइंट जहा ऑर्डिनल पॉइंट भी ठीक से या दैट मींस हमें कहि परिबा द अनदर नेम ऑफ द इंटरमीडिएट पॉइंट्स आर द नॉर्थ ईस्टर्न हैला साउथ ईस्टर्न हैला माने कोन साउथ वेस्टर्न हैला नॉर्थ वेस्टर्न हैला तो एडा हमें कहूचे दीज आर आल्सो द ऑर्डिनल पॉइंट तो कार्डिनल अपोजिट ऑर्डिनल हे परिबो कार्डिनल अपोजिट इंटरमीडिएट भी आपनकर हे परिबो देन रहिचे बियरिंग्स व्हाट डू मीन बाय द बियरिंग्स द एंगल मेजर्ड इन द डिग्री आपनकर जते बेले हमें क्लॉकवाइज बुलुचे कोन ना क्लॉकवाइज बुलुचे जते बेले कोनोसी डिग्री मापिबार अछि तो ए डिग्री टाको हमें कहूचे दैट इज द बियरिंग्स the angle measured कोन in degrees clockwise from the north to a specific point सेते बेले हमें कहूचे ताको हमें bearings बोली एति की जिंसा मन रहिबो तो किछि माइंड रे बाउंस होनी आई होप तो नॉर्थ थ्रू जते बेले हमें इस नॉर्थ थ्रू क्लॉकवाइज हमें बुलुचे प्रति डिग्री अपन माने एटा केते डिग्री कला एटा केते डिग्री कला एटा केते डिग्री कला तो टोटल टाको हमें कोन कहूचे ना bearings बोली हमें आको कहि परिबा next मते को ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल इज कॉल्ड व्हाट ये मते कहि परिबो जते बेले पचारुछि के ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन द मेमोरी एंड स्टॉप ऑब्जर्वेशन जते बेले मेमोरी कथा कहितिली मु कोन कहितिली मने पकेया पई गोटे लोक को आना मेमोरी तार केते स्ट्रांग अछि से विटनेस रो स्केच करी कि देखो कोन करी कि देखैबो मेमोरी दैट रिलेटेड विथ व्हाट ना ओनली अबाउट द स्केच हना नहीं जस्ट टू observe the spot about a spot observation we are
relating to the memory or the sketch हैला चलो नेक्स्ट मते कुह ना ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड गोटे ड्राइंग जदि हमें स्मॉल एरिया रो लार्ज स्केल ले करूछे एबे कहितली स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल हमें कहछे दैट मींस हमें कोन करि परिबा एठी प्लान वर्सेस मैप कहि परिबा दिस इज अ स्पेसिफिकल टेक्निकल वर्ड दैट मींस कोन कहूजे ना मैप तो हमें कहिबानी बट ताको हमें प्लान कहि परिबा मैप नहीं रे बच्चा मैप यूजुअली कोन कवर करिबो लार्जर एरिया माने आपनकर स्टेट हैला कंट्री हैला जदि हमें डिटेल ले देखिबा जदि when we go to the very detail where details like the length आपनकर मेजर करूची ब्रेथ मेजर करूची गोटे सिंगल रूम रो आपण मान जदि माने छोटो माने बहुत ही छोटो माने कोन गोटे घर गोटे बिल्डिंग ता भीतर रूम तार इंटीरियर डिजाइन हमें करछे 3D प्रिंट आपण मान देखि दिबे ताको हमें कोन कहछे प्लान जदि बेले गोटे स्टेट रही गला गोटे कंट्री रही गला जते बेले बड़ बड़ देखुचे ताको हमें मैप कहछे जते बेले ता जदि ऑप्शन आपनकर नाही कोन प्लान ऑप्शन नाही ताहले आपण माने मैप करि परिबे बट जदि प्लान ऑप्शन अछि ताहले आपण माने कहि परिबे गोटे स्मॉल एरिया लार्ज स्केल ले मापुचे ताको हमें कोन कहछे ना प्लान एति कि बुझिला हां नेक्स्ट मते कुह so a plan shows a very small area like a room building or a school in a great detail using a landscape next mate ko which of the following is not a component of map gote map ro component kiye nuho mate dike kahila which of the following is not important for not a component of a map components of map apun jani chanti three main components of map hochi distance direction and symbol kono ना DST distance रहिबो direction रहिबो symbol रहिबो तो scale factor for globe एटा तो रहिबोनी तो ऑड वन आउट आपनकर कोन हे जिवो ऑब्वियसली ऑप्शन डी हे जिवो कोन पचाची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ मैप पचारिची बा कंपोनेंट आपन को डिस्टेंस डायरेक्शन एंड सिंबल कहली तो डायरेक्शन भी रहउची सिंबल भी रहउची ह ना नहीं तो स्केल फैक्टर फॉर द ग्लोब हमें कहउचे दिस इज नॉट अ मैप कंपोनेंट दिस इज अ ग्लोबल 3D मॉडल नॉट अ मैप तो जते बेला आपनकर ग्लोब कथा कहउचे हमें कहउचे दिस इज अ 3D मॉडल गाइस ह ना नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन मते कुह now what is used to represent buildings roads and bridges on a map जते बेला हमें बिल्डिंग शो करूचे ब्रिज शो करूचे रोड शो करूचे तो रिप्रेजेंट केमिति करिया मते कुह कलर्स रे करिबा की कलर्स आर यूज्ड आपनकर ब्लू हैला फॉर वाटर green hela for plain brown hela for the mountains so these are the specific physical structures we are using primarily to identify by their shapes or by their symbols but jete bela apan man ko kahuchi kono na only the bridges hela buildings hela roads hela taku ame kono na symbol apan mane dekhithibe map heithibo apan man ko emiti thibo that means ame kon dekhuche na poles hela bridge hela taku ame consider korche that means the symbol ame ethi use karuche these are called the kono na conventional symbol ताको हमें को symbol बोली कहउचे ना conventional symbol clear guys next देखो ना कहिला maps showing cities towns and villages with their boundaries are जते बेले मैप शो करूची आपन को विलेज हैला माने जे कोन से बाउंड्रीज आपन को शो करूची एटा मु कहि सारी ऑलरेडी पॉलिटिकल मैप्स आपन को कोन शो करे ना the political maps define the boundaries whenever you see a map that shows a different types of borders between the states like Odisha and West Bengal between the India and Pakistan so this is nothing but the political map it focuses on the administrative divisions of that particular region the state or the districts or the countries next मते को ब्राउन कलर अने मैप यूजुअली रिप्रेजेंट कहिथिली को कलर काहा को रिप्रेजेंट करे मते कहिला ब्राउन कलर आपनकर रिप्रेजेंट करिवो काहा को क्विक कलर कोडिंग यूनिवर्सली आपनकर गोटे लैंग्वेज हमें कहि परिबा टू नो द जियोग्राफी मोर एंड मोर टू रीड द मैप मोर एंड मोर जते बेले वाटर कथा कहूची वी नो द कलर ब्लू इज रिप्रेजेंटिंग द वाटर over the map when the question is asking about the brown color is denoted of like physiographic properties ताहाल हम रिलेट करिबा कोन ना that always represented by the mountains the mountain को हम रिप्रेजेंट करूचे ब्राउन कलर रे
जदि फॉरेस्ट कहबो यूजुअली हमें फॉरेस्ट प्लेन रे पळेबो ताको हम ग्रीन रे रिलेट करूछी हो ना नहीं देन प्लेन्स आपण माने जानछन प्लेन्स ऑब्वियसली आपण को ग्रीन ही आसे हैला आपण माने को फॉरेस्ट डार्क ग्रीन आसला बेले फॉरेस्ट जदि देखिबे ग्रीन दिटा कंफ्यूज हेबे फॉरेस्ट आपण को डार्क ग्रीन रे पळे आसीबो एंड प्लेन्स आपण को सम लाइट ग्रीन्स हैला नेक्स्ट मते कुह एंड द लास्ट क्वेश्चन गुड मॉर्निंग मैम राकेश बहुत जल्दी आसिला वेरी गुड मॉर्निंग मते को येलो कलर ऑन ए मैप इज यूज्ड टू शो जदि येलो कलर हमें मैप रे शो करिछे काहले कोन शो करबो वाटर बॉडीज तो ब्लू कहिथिली काहा को कहिथिली येलो कलर geographic feature is the standard color for the plateaus like हमें कहजे डिक्का plateaus हला distinguish between the high mountains आपनकर ब्राउन भितरे ग्रीन भितरे माने हाईलैंड रो लोलैंड को जति हमें डिस्टिंग्विश करूछे ताहाले आपनकर कोन करबो ना plateaus हला येलो कलर होना नहीं V very good so on a standard physical map the color yellow is conventionally used to represent the plateaus are elevated regions of land that are relatively flat on the top and raise sharply above the surrounding area often referred to as tablelands okay so yellow color for the plateaus again कहूची जदि आपण माने वन डे एग्जामिनेशन पे प्रिपरेशन करूछनी 4000 दे की 2 इयर्स वैलिडिटी सहित ग्राफ करि परिबे सब वन डे एग्जामिनेशन महापैक रे पळेबो with 2 years validity and जदि सिविल एग्जाम सिविल सर्विस पे प्रिपरेशन करूछनी ताहाले प्रीवियस नै परिबे ओनली मेंस बैच पे आपण माने ओनली नै परिबे पी प्लस मेंस भी नै परिबे these are the respected price here is the helpline number and जदि आपण माने टीचिंग एग्जामिनेशन पे प्रिपरेशन करूछंती then अरे टीचिंग एग्जामिनेशन रो स्कोर लानी पळेला एडा बा हां तो आपण माने द्रोण एसएसबी टीजीटी रे ऐड हे परिबे 1 इयर वैलिडिटी सहित 1499 जदि जूनियर टीचर असिस्टेंट टीचर पे प्रिपरेशन करूछंती 1 इयर वैलिडिटी सहित 1199 ने करि परिबे संस्कृत एसएसबी टीजीटी पे 1 इयर वैलिडिटी सहित 1499 ऑलरेडी पेड पे स्टार्ट हे साडला मैम प्रभात 1.0 रो गोटे क्लास रखंतु प्रभात 1.0 रे प्रभात 1.0 ऑलरेडी राकेश करि सारलानी बुझिलो एबे तमरो ओडिसा जीके फिलहाल पई तो चलीची उत्कर्ष बैच माने महापैक रो ओडिसा माने ओडिसा जीके बैच चलीची आज आपण मानकर बोधे टूरिस्ट ऑफ ओडिसा क्लास अछि 11 रे सो आई नीड टू रेस्ट ओके चलो oops sorry again वेदांग टीचिंग चैनल ले जो माने अपन तो जॉइन हे नांती टेलीग्राम चैनल ले जॉइन हे जा सो दैट मु तमन को सेठी प्रोवाइड करि परिबेरी ए क्लास रो पीडीएफ ओके बाकी पुणी आपण मानकर नेक्स्ट क्लास से देखा हबो ऑन ट्यूसडे आई थिंक सॉरी आज तो आपण ट्यूसडे रही ऑन थर्सडे ओके तो थर्सडे आपण नेक्स्ट क्लास अछि अबाउट द मैपिंग एंड ऑल सो देखा हबो से पर्यंत बाकी तो माने क्लास देखि देथिबो टिके रिवीजन कर देथिबो टिके बेसिक आईडिया आनि देथिबो देखा Thank you so much. Have a good day. Take care of yourself. But first of all, do prioritize your parents. This would be your first priority. No one else in the world. Thank you so much. Bye bye. Have a good day. Jai Jagannath.